हेलो एंड वेलकम टू इजी अप्लाई गाइस। ये वीडियो जो पूरा का पूरा बेस्ड है गूगल हायरिंग पे। सो इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट गूगल हायरिंग जॉब ओपनिंग. सो यू विल गेट द जॉब ओपनिंग एंड अप्लाई लिंक फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड इंटरव्यू गाइडेंस. पूरा का पूरा गाइडेंस जो कि गूगल के लिए इंपॉर्टेंट होता है, जैसे आपको कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है गूगल के इंटरव्यू के लिए. अभी जो जॉब एप्लीकेशन मैंने प्रीवियसली जो दी हुई थी उससे जो कैंडिडेट ने अप्लाई करी है, उनके कुछ कैंडिडेट के रिज्यूमे शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं. उनके इंटरव्यूज़ होने वाले हैं, जो कि एक्सपीरियंस है उनके डायरेक्ट इंटरव्यू होने वाली है 28 अप्रैल को. तो उस पर मैं बता रहा हूँ जैसे सिलेबस टॉपिक्स एंड जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है गूगल के इंटरव्यू एंड अपकमिंग जॉब ओपनिंग से रिलेटेड. तो be with me to the end of the video. You will get to know more about the Google hiring and the hiring process of क्लाउड टेक्निकल सोल्यूशन इंजीनियर या फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियर का भी जो है वो ये भी हम इस वीडियो में कवर करेंगे. एंड वन थिंग मोर, दिस ऑल इन्फॉर्मेशन इज फ्रॉम गूगल ऑफिशियल्स एंड सम फीडबैक फ्रॉम द हायर्ड कैंडिडेट. Let's just move for the job opening first. So here is the job opening for cloud technical solution engineer, Google Cloud. So minimum qualification will be bachelor degree in science, technology, engineering, mathematics or equivalent practices, experience in reading or debugging code with one or more of the following: Java, C, C++, Python, Shell, Perl and or JavaScript. Experience advocating for customer need, and preferred qualification is experience with web concept like HTML, XML and HTTP and or JSON, experience in front-end performance debugging, understanding of SQL, Linux and object-oriented programming languages, knowledge of database concepts such as connection parameters, drivers, server-side settings, best practice, DOM trees in varying like Hadoop, MySQL, BigQuery, Snowflake, etc. Knowledge with system operations, command line, and general networking. So this is the all about the job opening. Take the screenshot and अभी आगे आने वाली स्लाइड्स में आपको पता चल जाएगा कि ये जो चीज़ें हैं इसके सिलेबस की जो टॉपिक्स है वो भी मैं अभी आपको और ब्रॉड में बताऊंगा. एंड कुछ चीज़ें मैं अपकमिंग वीडियोज़ में बताने वाला हूँ, क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है बट मैं नहीं चाहता तो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाए. गाइडेंस बहुत ज़रूरी है, आपको गाइडेंस फॉलो करनी है इफ़ यू वांट टू वर्क विद गूगल. And one thing more, if you are new to this channel, do not forget to subscribe Easy Apply to get regular update about the job opening and about such type of videos. So all the single information is very important. Don't skip the video and note all the detail. Let's move. And here is the DSA topic. हम इसके बारे में अभी बाद में बात करेंगे. SQL की भी ये बात करेंगे, बट पहले बात करते हैं क्या इंटरव्यू का जो गाइड है, जो बेस्ट प्रैक्टिस एडवाइस एंड टिप्स फ्रॉम गूगल ऑफिशियल. लेट्स मूव for that. So yes, here is the interview at Google, best practice and advice and tips. There are certain things you can do to properly prepare for interview. Let's walk through them. तो कुछ इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि कैसे आपको फोकस करना है एंड क्या चीज़ें होनी चाहिए. लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे आपको अपना रिज्यूमे तैयार करना है एंड रीड योर रिज्यूमे एंड द जॉब डिस्क्रिप्शन टू हेल्प यू ड्रॉ लाइन बिटवीन द टू. वेयर डू they connect? We want to take a very opportunity to set yourself up for success. देखिए, पहली बात तो ये, जब भी आप रिज्यूमे अपलोड करते हो, क्या करते हो, एक रिज्यूमे बना रखा है मस्ट. मैं आप सबको कंसीडर नहीं कर रहा, मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट डू सच टाइप ऑफ थिंग. रिज्यूमे जो पहले से बना रखा है वही हर एप्लीकेशन में पेस्ट किए जा रहा हो, अपलोड किए जा रहा हो. दैट इज़ नॉट अ गुड वर्क टू गेट एनी जॉब. सो आपको करना क्या है, अगर जो अच्छी कंपनीज के लिए अप्लाई करते हो आपको अपना रिज्यूमे अपडेट करना है इन द रिस्पेक्ट ऑफ द जॉब डिस्क्रिप्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर जॉब ओपनिंग. सो दैट आपकी जो, जैसे इसमें बोला गया कि दैट विल हेल्प यू टू ड्रॉ द लाइन बिटवीन द टू, वेयर इज टू कनेक्ट एंड फॉर एवरी अपॉर्चुनिटी. तो वो चीज़ें कब कनेक्ट, जैसे आपको नॉलेज है, आई नो यू हैव नो नॉलेज ऑफ HTML, HTTP, ये सारी चीज़ें आपको नॉलेज है, बट रिज्यूमे में आप मेंशन नहीं करते हो. कुछ चीज़ें हैं जो उसको आप रिमूव कर सकते हो और कुछ चीज़ें हैं जो इस जॉब डिस्क्रिप्शन से आप उसको ऐड कर सकते हो. तो ऐड दैट, क्योंकि ये जो रिज्यूमे होता है, बहुत सारे एप्लीकेशन आ जाते हैं तो कोई पर्सन पर्टिकुलर रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट नहीं करता. ये AI बेस पे शॉर्टलिस्टिंग होती है विद द हेल्प ऑफ सम पर्टिकुलर कीवर्ड्स. तो कीवर्ड्स के बारे में आपको पता है, मैं उसको एक्सप्लेन नहीं करूँगा, अभी वीडियो लंबी हो जाएगी. कीवर्ड्स को लेकर के आपके रिज्यूमे में सर्च किया जाता है. अगर वो मैच करता है तो मतलब वॉक थ्रू करते हैं, एंड नहीं होता है तो बिना किसी हेजिटेशन के आपका रिज्यूमे रिजेक्ट कर दिया जाता है. एंड ये
बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। और बेकार चीज़ ये है कि अगर रिज्यूमे वो दोबारा से मिला, मतलब अगर आप फिर कर रहे हैं तो वो स्क्रीनिंग भी नहीं होगी, डायरेक्टली वो रिजेक्ट ही हो जाएगा। तो अवॉइड दैट। उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ रिज्यूमे को अपडेट करना है इन द रिस्पेक्ट ऑफ द जॉब डिस्क्रिप्शन। सो ऐसी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। एंड हिट द लाइक बटन अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही है, एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड, उनको भी ये चीज़ें समझ में आ जाए। और ये चीज़ मैं बता रहा हूँ नॉट फॉर द ओनली गूगल, दिस अप्लाइज एंड इस पे सारे जो TCS, इन्फोसिस, विप्रो जो भी कंपनीज है, ये इस पे आपका रिज्यूमे स्ट्रॉन्ग और एप्लीकेशन जो आप स्टैंड करते हो वो आपका स्ट्रॉन्ग हो जाता है अगर आप ये चीज़ करते हो। क्योंकि जहाँ पे एप्लीकेशन नंबर ऑफ एप्लीकेशन ज़्यादा होती है वहाँ यही हो जाता है, मोस्ट ऑफ द केसेस में यही होता है। एंड फोकस ऑन डेटा एज यू स्टार्ट द थिंकिंग अबाउट थिंग्स यू वांट टू हाईलाइट इन योर इंटरव्यू, डोंट फॉरगेट टू इंक्लूड डेटा। अगर आप कोई चीज़ बता रहे हो तो उनको मतलब कोई आप वाक्य बता रहे हो यानी कोई एक्सपीरियंस बता रहे हो तो वो पूरा एक उनको सर्टेन तरीके का आपको एक्सप्लेन करो। दिस हेल्प यू इंटरव्यू अंडरस्टैंड नॉट जस्ट टू ओवर ऑल अचीवमेंट बट हाउ बिग ऑफ एन इम्पैक्ट यू मेड। मतलब जैसे कोई अचीवमेंट की बात कर रहे हो आप तो कितना इम्पैक्ट पड़ा एंड उससे आप में क्या इम्प्रूव किया, क्या सीखा, यू हैव टू टेल देम all. And let's put it way, what data can you provide that tells the story of your experience in terms of need of this position? The equation we suggest goes a little something like this. So ये सारी चीज़ें जैसे इंक्रीज कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड बाई 22% इन 3 modes. So these are the important things. Look back at the past work experience and come ready with question. Next come with the interview with your own question. बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं कि इंटरव्यूअर जो होता है उनके समक्ष आप जैसे इंटरव्यूअर जब कहता है डू यू हैव एनी क्वेश्चन फ्रॉम मी, तब करते हो नहीं। तो आपको ये चीज़ बिल्कुल नहीं करना ही है। जो इस चीज़ को समझते हैं, मैंने काफ़ी इंटरव्यूज़ किए हुए हैं तो उसमें समझ में आता है कि क्यूरियस हो आप जानना चाहते हो एंड यू हैव डन योर होमवर्क। एंड ये चीज़ें जब आप करते हो, जैसे रिज्यूमे की बात कर लें एंड फॉर योर अचीवमेंट एंड ये सारी चीज़ें जब आप करते हो, इसमें आपको समझ में आता है, सामने वाले इंटरव्यूअर को समझ में आता है दैट यू हैव डन योर होमवर्क। जब आप होमवर्क करके आते हो इंटरव्यूअर के सामने, दैट विल बी अ वेरी इंप्रेसिव फॉर द इंटरव्यूअर। अगर आप कम देखिए, स्पेशली मैं गूगल के लिए बता रहा हूँ कि ये आपकी नॉलेज नहीं चेक करते। जैसे कि मैं बता दूं, आपको किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर नहीं आता तो उसमें आपकी वे ऑफ आंसरिंग एंड जैसे आप कहते हो कि दैट यू डोंट नो द आंसर, बट अगर आप उसको सही तरीके से बता रहे हो दैट इंटरव्यूअर लगे कि इसके बारे में आपने होमवर्क किया हुआ है, तो वो इम्प्रेसिव होता है। वो कुछ और काउंटर क्वेश्चंस करेंगे तो उनको आप चांस दो कि क्वेश्चन करें, ऐसा नहीं कि आपने होमवर्क ही नहीं किया और डायरेक्टली आ गए। सो ये इंप्रेसिव नहीं होता, इसमें डायरेक्टली आप रिजेक्ट हो जाओगे। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में देनी है, आप हमेशा क्वेश्चन पूछो एंड if you do these things, we think you will be prepared to talk about yourself and about the position. We also believe it will set you up for success by minimizing external confusion. We want you clear and calm so you can really explore your experience, your desire and the position and how we connect. And like wait, okay, मेक श्योर योर स्पेस इज़ रेडी फॉर द वीडियो। यानी कि कुछ इंटरव्यूज़ या कुछ मैं पर्टिकुलर किसी रोल के लिए नहीं बता रहा हूँ, लाइक सम ऑफ द प्रोसेसेस एंड फॉर द सम रोल you have to make your own video, like you have to take an topic and you have to speak about that, what you know and what will be the prevention on all that. It's depend on the particular topic. If you are doing a virtual interview, take some time to prepare your space, find a quiet area with good internet connection where you won't be disturbed. Check your mic, your videos and your Wi-Fi to make sure that everything is in working order. We also recommend including notebook and a pen or pencil in your gear, something it's easier to scribe than type, and if you need assistive technology or any other accommodation, set that up or let us know and we will happy to help. Guys, Google provide accommodation facility for the particular candidate who have not able to complete the प्रोसेस। तो एकोमोडेशन की चीज़ें भी आपको मिल जाती हैं। तो आप मेल लिखोगे टीम को, आपका एकोमोडेशन बहुत इजीली मिल जाता है, बस आपको मेल लिखना होता है।
तो आपको एकोमोडेशन भी मिल जाएगी, एंड यू हैव टू टेक अ पेंसिल एंड पेपर, ये सारी चीज़ें कर सकते हो आप। या फिर इंटरव्यू, हाँ, अगर आपने लेके पहले से नहीं, यूज़ करने से पहले इंटरव्यू से आपसे पूछना है कि आप यूज़ कर सकते हो। सो इफ़ इंटरव्यूअर अलाउज, आपको पूछना एक एटिकेट होते हैं, एंड यू हैव टू शो देम योर एटिकेट एंड फॉर द देयर रिस्पेक्ट, ओके। And let's come for the first thing about the interviewing process. Like interviewer ask you something, some question, so collect your thought first and ask a minute to collect your thought. If you need it, write it out, it help clearly, and be mindful of the time you have. Keep an eye on the time, it will fly by. So you can ask them for a minute to, and you can ask to repeat the question again. So आपको थोड़ा और टाइम मिल जाएगा क्वेश्चन के बारे में सोचने के लिए, एंड बिफोर यू स्पीक कलेक्ट योर थॉट व्हाट यू आर गोइंग टू स्पीक, ओके। एंड इससे अगर आपको क्वेश्चन क्लियर भी नहीं हो रहा तो आप क्वेश्चन क्लियर करने के लिए दोबारा पूछ सकते हो, एंड ये नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होता है। And we appreciate your thinking time chat with us and want to be a conversation that help answer some of your question too, and good luck, but have fun too, okay. So these are the importance about the interviewer and about interview process of the Google. So you have to take care of a resume, a way of explaining, and limitation of explaining, and all the things related to the interview, and what about your answers, and do not forget to ask question from them, okay. So let's come for the topics and syllabus. So this is the description of job, so you will get the apply link into the description box, so check for that and apply, and come after applying, come to this video and complete this, because this is very important for your future and for your career. Do not forget to follow these steps. Let's come to the DSA topics for the cloud technical solution engineer. ये जो DSA के टॉपिक्स हैं, ये आपका या तो क्लाउड TSC पे कर लो आप, या फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियर पे कर लो। ये सारी चीज़ें जो DSA पे बेस्ड होती है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है DSA के लिए, लाइक लिंक लिस्ट, वेट मैनिपुलेशन, स्टैक क्यूज, बाइनरी सर्च, हीप्स, ग्रेडी एल्गोरिथम्स, डायनेमिक प्रोग्रामिंग, वेक्टर्स, एरे लिस्ट, बिग ऑन टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, सॉर्टिंग, two pointers, sliding window, union, find, string manipulation, trees and graphs, BFS, DFS, recursion, backtracking, hashing, and tries, trees and binary index trees. So these are the topic from DSA. You have to prepare for this. You have to prepare for the basic terminologies about the DFAs as well. And here is some SQL command. ये जो बेसिक चीज़ें हैं वो मैंने इस वीडियो में कवर की हुई हैं। आप स्क्रीनशॉट ले रहे एंड और टेक द स्क्रीनशॉट, या फिर लिख सकते हो, ये चीज़ें आप प्रिपेयर कर सकते हो। एंड इफ़ यू नीड अनदर असिस्टेंस, पिंग टू मी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी टेलीग्राम की, ज्वाइन दैट फॉर द लेटेस्ट अपडेट, या फिर कुछ भी, और इंस्टाग्राम की लिंक मिल जाएगी इफ़ यू नीड एनी पर्टिकुलर असिस्टेंट एंड पर्सनल असिस्टेंट, तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा। एंड कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर देना इफ़ यू नीड सच एनी काइंड ऑफ फील्ड and any kind of particular video, so I will look for that. And upcoming video is very important, so stay tuned for the upcoming video. So here is the SQL, some basic command like select clause, so you can take the screenshot, and order of operations like parameter, parenthesis and manipulation, division and addition and subtraction, removing duplication, select distinct straight from customer. You can take the screenshot and practice for that. And in operator, between operator, this is the interview question. आप ये पूछे जाते हैं, और यूनिक्स की कमांड भी पूछे जा सकते हैं, जैसे मैंने सिलेबस की बात करी। सो सिलेबस में आपको ये मिल ही जाना है। जैसे नेटवर्किंग रहेगा, नेटवर्किंग मैंने मेंशन करना भूल गया, तो आप उसको ध्यान में रखना। और SQL होता है, लाइनक्स, यूनिक्स, ऊप्स कॉन्सेप्ट, DSA एंड नेटवर्किंग की चीज़ें होती हैं। तो आप DSA की चीज़ें यहाँ मिल जाएगी आपको, SQL की चीज़ें ये रही, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। So in operator, between operator and comments, and why we use comment to add notes to our code. This is a comment and it won't get execute. यानी कि आपको पता है, अगर आपने पढ़ा हुआ है तो ये कमेंट एग्जीक्यूट नहीं होते हैं। आप पर्टिकुलर किसी लैंग्वेज की बात कर लो, C++, जावा, पाइथन, all the language allows you to drop a comment for your code,
so that other can understand easily what you are doing in that particular statement and that particular block of code. And where clause, we use where clause to filter data operation like greater than or equal to, less than or equal to, equal, not equal, and okay. And basics of use SQL stores. And SQL is not a case sensitive language. In MySQL, every statement must be terminated with a semicolon. Okay. And limit clause, using clause. And here is the inner join and outer join. These all are the SQL. And for the Linux Unix, I will make another particular video, so you will get and have. And if you have any kind of question, ask me. And you can ask from the group, and you will get to know more about these technologies and these processes. So best of luck and thank you. Okay.